call that as a local cloud, you can see. So this is the situation. We have devices, we call them edge devices. This is a standard cloud, big infrastructure running huge compute resources. In between sits edge nodes. What are these edge nodes? Well, these are some standard, they can be standard components like full-fledged computers. They can be simple application, maybe some amount of computational intensive, some computing device. So they together form an edge node. But they are closer to this. Okay? Why do you need this? We need because the application that is going to communicate will not be here but will be here. So the data transfer between this and this will be local, very close. So obviously the latency will be reduced. But does it mean that we completely eliminate this? Of course not. We will require it. When we will require it? We'll come to it. So this is the basic idea of edge computing. It says, with the advent of IoT and a huge data generated, you cannot run everything on the cloud. It's not possible. So you have to take the computation to some extent very local. But you cannot do all this in these devices. They don't have that power. So keep a layer in between which is local to these devices, which can communicate and give you. So what do you achieve? You achieve one hop, a local compute, local storage. Okay, you can run a database here instead of sending the database up to the cloud. Then, so collection of edge nodes is what we call a local cloud. That's the basic difference, right? Cloud becoming very local. Centralized clouds, this is the centralized cloud and this is the local cloud. Local cloud is a collection of number of nodes. It's not one single infrastructure maintained at a warehouse or something like this. Okay? So what do we do? Well, that's how it is. We have a far edge, data generated through sensors, actuators, robots, humans. Near edge, the ones carried by people, phones, tablets, wearables, localized, very localized, because it's in one hop you can reach there. In cloud, it's multiple hops, right? You go to some gateway, from gateway to some network, from network to another network. Multiple routers take you to the cloud. यहाँ पे वो नहीं है. एक आप direct connection करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं. इसलिए one hop कहा गया. Then it is geo distributed. Infrastructure is WAN. Central cloud obviously it's WAN again. Okay. Why the shift? We know that. Idea is latency has to be reduced. Low latency, local processing of high bandwidth sensors. Very important. And this has to be there because you need privacy. So these are two concerns. I will talk about the challenges of this. ये इतना आसान नहीं है. आप कहते हैं कि हाँ ठीक है सब कुछ लोकल कर लो. ऐसा होगा नहीं. तो हम face recognition applications देखेंगे. So the first point of contact between the far edge and the system is masking the cloud outages. Let's talk about this later. Okay. Why not? Why it is possible? Cloud तो 1980s 90s से शुरू हुआ है या late 2000s की बात कर रहे हैं. वहाँ से या चलो ठीक है एक और decade आगे बढ़ जाता है. It was there. पर ये edge computing अभी इतना popular क्यों है? One of the basic reason is progress in networks. ठीक है? And that is what you can see. So you have SDN, software defined network, where you completely segregate the data plane and the control plane. मतलब routers अब आप programmable कर सकते हो. वो ऐसा नहीं है कि उनको आप fixed infrastructure आपने एक बार खरीद लिया तो वो वहीं बैठ गया. उसके बाद आप उसको ये नहीं कह सकते कि अभी के infrastructure में प्रॉब्लम क्या है. आपने Cisco की राउटर खरीदी, डिप्लॉय कर दिया, लेवल 2, लेवल 3 जो भी है. एक बार प्रोग्राम हो गया सो हो गया. अब उसको कहा गया कि यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, बस वही है. और उसको राउट बदल नहीं सकते. ठीक है? तो मतलब राउट का मतलब से डायनामिक नहीं कर सकते. जब आपकी लोड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं कि वो राउटर खुद से सोच ले अच्छा ये देखो इस तरफ राउट बढ़ रहा है तो मैं इस तरफ जरा सब बाईपास करूँगा. ऐसा नहीं होगा. आपने जो कॉन्फ़िगरेशन एक टाइम पे किया वो उसी हिसाब से चलेगा. अब वो चीज़ें बदल गई. Now the thing has become, it's called software defined networking. Networking defined by software. Programmable switches हैं. वो अपने हिसाब से काम करता है. उसमें एक प्रोटोकॉल चलता है जिसके कहते हैं ओपन फ्लो प्रोटोकॉल. Depending on the amount of traffic,
यू कैन सी वेयर आई नोट। सो आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स अलग होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज, राइट। नाउ इट्स पॉसिबल टू डू ऑल दैट वेरी वेरी लोकल। तो एक रीजन ये है कि नेटवर्किंग की कॉन्सेप्ट बदल गई है। अभी वैसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार हो गया तो हो गया, यू कैन प्रोग्राम, राइट। अल्ट्रा लो लेटेंसी, ह्यूज कम्युनिकेशन बैंडविड्थ, 5G 6G की अवेलेबिलिटी आ गई। सो अब हम इसे यहां तक आ सकते हैं, जस्ट दिस वन, फ्रॉम जस्ट अ डेटा प्रोड्यूसर टू डेटा कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। अब सेंसर्स और ये लोकल वाले जो चीज़ा है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा बनाने के लिए नहीं है, यू कैन ऑल्सो कंज्यूम दैट, right? So that's the idea of pushing it towards the edge. Okay, there are many models. One is called mobile offloading. इस पे हम बात करेंगे details. So you see there are a lot of models which are available for edge computing. पहली इसे कहते हैं mobile offloading. क्यों ये करना है? Let's take an example of face recognition. Application is given a face, you have to identify whose face is it. ठीक है? अब इसको in a terms of modules and design level पे सोचो। एप्लीकेशन है क्या? एक डेटाबेस कहीं रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे फेसेस डाले हुए हैं, आपको एक फेस दिया गया है, वो फेस किसी उस डेटाबेस के फेस से सर्च करता है, ढूंढता है हर सर्च, जिससे इसका मैक्सिमम सर्च मिल गया, वो आपको बताएगा ये आदमी ये है। और वो जो सर्च है डेटाबेस में वो सारे टैग हैं, इस फेस का ये बंदा है, इस फेस का ये बंदा, इस तरह से वो टैग किए हुए। तो जिसका मैक्सिमम मैच होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड जिससे मिलेगी, वो कहेगा कि ये फेस उसका है। इसी को ट्रेनिंग कहते हैं, आई मीन सॉरी नॉट ट्रेनिंग, दी वैलिडेशन, ओके, और व्हाटएवर। सो सो द रिकॉग्निशन पार्ट। अब ये हुआ कैसे है? वेल देयर इज सम काइंड ऑफ अ मॉडल व्हिच वाज देयर, जिसको आपने ट्रेन कर रखा है इन ऑलरेडी टैग डेटा पे, और वो जानता है कि अच्छा ये अगर फला इस तरह का फीचर्स है इस डेटा पे तो ये वाला ये क्लास है, ये अगर फीचर्स है तो ये क्लास है, इस तरह। तो आपने कुछ उसको लर्निंग करवा दी, सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं कि भाई हर इन चीज के लिए ये इसका डेटा है, ये चीज के लिए ये इसका डेटा है। सो जिस चीज से वो आइडेंटिफाई करेगा उसे कहते हैं फीचर्स। जैसे अगर आपको फेस दिखाएगा, फेस में क्या होगा, वो उसके ज्योमेट्री को ढूंढेगा, उसके ज्योमेट्री से अलग अलग चीजें निकालेगा, कहाँ कर्व्स हैं, कहाँ क्या है, और इसको वो एक एज अ वेक्टर लिखेगा, उसे कहते हैं फीचर वेक्टर, राइट। वैल्यूज हो गई। सो दिस इज टैग टू अ पर्टिकुलर क्लास। सो दिस इज द ओवरऑल द एप्लीकेशन, राइट। तो वो उसको ट्रेनिंग कर दी गई। अब वो अननोन अगर कोई फेस आएगा वो उसको वही तरह से ढूंढने की कोशिश, उसके फीचर्स निकालेगा और वो फीचर्स की मैचिंग करवाएगा कि अच्छा देखो तो इनके ये जो है मेरे पास ऑलरेडी है उसके सारे फीचर के कंपैरिजन में कौन से फीचर वेक्टर से ये सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। जिससे सबसे ज्यादा मैच करेगा बोलेगा ओके फाइन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास को उठाओ और कहो कि ये उस क्लास में बिलोंग करता है, एंड दैट्स व्हाट यू गेट। दैट्स बेसिकली मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। नाउ अब ये चलेगा कहाँ पे? ये ट्रेनिंग वगैरह सब होगा कहाँ? क्लाउड पे। और क्लाउड पे तो उतना जगह, हमारी लेटेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो क्यों ना उसे हम मोबाइल की तरफ ले जाए जहाँ पे डेटा कलेक्ट हो रहा है, जहाँ पे फेस, उसमें आपने फेस क्लिक किया, अगर वहीं पर रिकॉग्नाइज कर लेते तो अच्छा होता। जगह है नहीं तो क्या किया जाए? क्यों ना कुछ लोकल नोड्स को ढूंढा जाए और वहाँ पे ऑफलोड कर दिया जाए सारे कंप्यूटेशन। लोकल मतलब लोकल टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस, क्लाउड पे नहीं, ठीक है। एज्यूम कर लो एक सोल्जर कहीं पे किसी को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है एंड इज गोइंग टू लुक एट अ पर्टिकुलर इंट्रूडर एंड जस्ट कहीं पे कुछ डेटाबेस पे मेंटेन है, तो वो फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन रन करेगा, ओके। उतना टाइम है नहीं ढूंढने के लिए, तो रियल टाइम करना है, तो क्यों ना अगल बगल कहीं पे जोग्राफिकली लोकेटेड बहुत नियर कोई एक कंप्यूटेशन कहीं पे है, वहां पे उसे ऑफलोड कर दिया जाए फॉर द टाइम। कैसे होगा वो हम बाद में बात करेंगे। द आइडिया इज दिस इज कॉल्ड मोबाइल ऑफलोडिंग। You take that computation, put it on a nearby some kind of an compute unit and do it there, not to the cloud. सर लेकिन ये इंस्टॉलमेंट में वो जो कंप्यूटेशन में जो लाइट, हाँ आएंगे इसमें, वो है इसकी टेक्निक में अभी आऊँ। जैसे वो VM सिंक्रोनाइजेशन सिंथेसिस कहते हैं उसे, आ रहा है कैसे होगा। Then it is called cloud offloading. अब ये मोबाइल ऑफलोडिंग तो ठीक है नियर बाई किसी पे, कुछ जगहों पे नहीं पूरा डेटा ही आपको क्लाउड पे, क्योंकि बहुत बड़ा कंप्यूटेशन है तो वो आपको पूरा क्लाउड में भेजना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड क्लाउड अपलोड। जैसे हम शॉपिंग कार्ट अपडेटिंग की बात हो
e-commerce website की typical application, right? Now, what I'm trying to show you is the problems associated with this. Okay, what are you trying to achieve? You're trying to achieve reduction in latency and saving of power. मोबाइल जितनी दूर भेजने की कोशिश करेगा उतनी जल्दी उसका बैटरी ड्रेन आउट होगा. जितनी कम पोजीशन में कम लेटेंसी में भेजेगा वो उतनी बैटरी उसकी रहेगी. तो आप नहीं चाहेंगे कि आप एक बड़े टेरेन पे चले गए, आपका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाए, आपको बहुत देर चलना है. सो यू वांट टू सेव पावर फॉर दैट. सो यू कैन नॉट अलाउ इट टू बी ड्रेन. तो लेटेंसी और एनर्जी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट. Similarly, you have cloud offloading. Here the latency is important. Okay? जितनी जल्दी अपडेट हो उतना अच्छा है ना. अब latency तो कर नहीं सकते. Okay. So edge data processing should also give you facility of localized data analytics. Local search, loss check. So crowd management. Somebody has lost me. कुंभ मेले में तो आने ही वाला है इस तरह के applications. भर के आएंगे. ठीक है? So you have a लॉस्ट पर्सन आइडेंटिफिकेशन. गुम हो गया कोई बच्चा, आपको ढूंढना है क्या? फेस रिकॉग्निशन ही तो है, या कुछ एक ऑलरेडी डेटाबेस से एक इसकी पिक्चर ले ली और चलो भाई डेटाबेस में ढूंढते रहो जो डेटाबेस आपके पास है. पर वो डेटाबेस है कहाँ पर? क्लाउड पे. तो हो गया. अब वो पूरा डेटाबेस क्लाउड में ढूंढने लगा तो वो बच्चा तो मिलेगा नहीं, तब तक आपका पूरा एल्गोरिथम चलता ही रहेगा. तो उसे लोकल ढूंढना है, क्योंकि आप पूरे भारतवर्ष के डेटाबेस से ढूंढेंगे नहीं. आप प्रयागराज के ढूंढेंगे और या तो कुंभ मेले में जितने फेसेस लिए गए उसका ढूंढेंगे. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग. फिल्टरिंग, रिमूव फेसेस, जिनको नहीं चाहिए उनको हटाओ. एग्रीगेशन, कंबाइन द डेटा. व्हाई? बैंडविड्थ. ओके, लेट्स व्हाट आर द चैलेंजेस. तो एज कंप्यूटिंग अच्छी बात है, पर इसके चैलेंजेस को हटाना है. दिस इज वेयर यू टू थिंक. वन ऑफ देम इज ऑल द यूजुअल प्रॉब्लम्स विद डिस्कशन. नेटवर्क है, प्रॉब्लम्स तो होंगे ही. रिलायबिलिटी की इशू है, कभी भी टूट सकता है नेटवर्क. नेमिंग, प्रोग्रामिंग, हेटेरोजेनिटी, स्केलेबिलिटी, ऑल दीज प्रॉब्लम्स, यूजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर हियर एज वेल. इन एडिशन, you have lot of problems such as security is a big issue, क्योंकि आप बहुत लोकल चीजें करने वाले हैं तो उतना सिक्योर है नहीं. आपको हैंडल करना है रन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर. यू हैव टू प्रोवाइड दैट ऑल टाइम. रिमेंबर, आप फिर किसी को दोष नहीं दे सकते. नहीं अमेजन ने ऐसा नहीं किया, आप कर रहे हैं. सो यू हैव टू गिव एन ऑल टाइम सर्विसेज. सो योर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी गुड इनफ. नॉन टेक्निकल इज हु प्रोवाइड्स इट, हु फंड्स इट. Let's come to the main issue here. Let's take one by one. तो प्रॉब्लम क्या थी? गुड, एज कंप्यूटिंग अच्छा है, पर करेंगे कैसे? So let's take the first technique, which is called cloud offloading. And you see two applications here. One is an Apple Siri and a wearable device. So you have rich interactive applications today running on mobiles. Okay? जितनी बल्कि एप्लीकेशन चलाओगे उतना ज्यादा डेटा और उतना ज्यादा नेटवर्क उतनी खराब. एंड द मोर यू यूज दिस नेटवर्क, द चांसेस आर द बैटरी गेट्स ड्रेन्ड आउट वेरी क्विकली. ठीक है? वाईफाई जब चलाते हो तो देखते हो क्या हाल है. स्क्रीन को जब मैक्सिमम ब्राइटनेस पे करते हो तो बैटरी खत्म. सो वन ऑफ द वेज टू सेव पावर इज टू डू दिस स्मॉल ट्रिक्स. So you have to save the power, and one of the options is to reduce the latency. Okay, how? Well, these applications are too expensive to run on the clouds alone. What you have to do? You have to offload that to a backend server. Today's remote cloud is suboptimal based, high latency and limited bandwidth. So what we'll do is, let's look at the architecture. The problem is this. इसे हम कहते हैं cloud layer. ठीक है? This is the solution to this problem. और ये cloudlet क्या है? Look at this. This is the devices, and here is a cloudlet. It's a nearby offloading site dispersed at the edges of the internet. Not the usual cloud infrastructure, but somewhere some kind of a compute unit which is very closer to the edge devices, so that when required,
these people can offload their data here. Okay, this is the whole idea. और ये इतना मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं, you can actually run VMs on top of that. So you can run all those computations which you could have done here to this. Okay, this is called a cloud. Now the question is how to launch a custom backend server at any arbitrary edge. How does this happen? Problem समझ में आया क्या है? Take your computation closer to the edge. Good enough. But you need an infrastructure for that. That's called the edge nodes. Question is, how will you send those data from the edge devices to that particular device? This technique of sending the data is called offloading, mobile offloading. This is called a cloudlet. Okay, let's go deeper. So here it is. Okay? This is called the the core. Okay, that's the enterprise cloud. Amazon kahin pe hai. These are some such kind of intermediate infrastructure compute units, and these are edge devices. तो ये तीनों इससे जुड़े हुए हैं, इससे depending on whichever is closer to that particular thing. These are called edge devices. Okay, let's talk about how does this happen. Okay, to make this viable and scalable, we need an infrastructure. ठीक है? The network infrastructure का मतलब है there should be availability of good compute units at the cloudlets. There should be availability of good amount of storage in the cloudlets. There should be good amount of network. तीन चीजें होनी चाहिए. ये cloudlets जिनसे आप जुड़ रहे हो, ये काफी अच्छे होने चाहिए. So that you can do lot of applications. जैसे virtualization की support होनी चाहिए उनके लिए. Storage होना चाहिए कि आप full fledged database उनमें store कर सकते हो. और network अच्छा होना चाहिए. तभी ये सारी चीजें काम करेंगी, वरना कोई फायदा नहीं है. ओके, सो यू हैव मल्टीपल एप्स रनिंग ऑन द एज. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखो, किसी एक सोल्जर का फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन ही मान लेते हैं. एक सोल्जर के मोबाइल, नोकिया की मोबाइल हो सकती है, किसी एक एंड्रॉइड हो सकता है, किसी का iOS हो सकता है. एप्लीकेशन तो अलग अलग है. और उस सारे लोगों को अचानक से रिक्वायरमेंट हो गई कि एक ऐसे टेरेन पे जा रहा है जहाँ पे कंप्यूटेशन कर नहीं सकता, तो इमीडिएटली चाहिए. सो व्हाट इट डज इज उसने ढूंढ लिया कि नियर बाई एक ड्रोन मूव कर रहा है, राइट? और उस ड्रोन में अच्छे खासी कंप्यूटेशन यूनिट है. तो आइडिया क्या है? वो अपना पूरा कंप्यूटेशन उस पर सेंड कर देगा मोबाइल पे, और सॉरी उस ड्रोन पे, जो अनमाइंड एरियल व्हीकल यूएवी कह सकते हैं. सो लेट्स अज्यूम कि 3-4 सोल्जर्स जा रहे थे और अचानक एनिमी और किसी एक रेजोल्यूशन के लिए उनका नेटवर्क काम करना बंद कर दिया. अचानक से उनको क्या करना पड़ेगा? ऑफलोड करना पड़ेगा पूरी जो कंप्यूटेशन है टू एक ड्रोन जो उनको गाइड करके ले जा रहा है. उसमें है वो सारी चीज़ें. यू जस्ट सेंड दैट देयर, वो ड्रोन उनको कर देगा वो कंप्यूटेशन, और वापस उनके तरफ वो भेज देगा द रिजल्ट्स. राइट? दैट्स द होल स्ट्रैटेजी ऑफ वेरेवर यू हैव वेरी लेस बैंडविड्थ एंड यू एंड अप इनटू दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस. आपको ऑफलोड करना है. किस पे ऑफलोड करेंगे? कोई एक एज नोड पे करेंगे विच इज वेरी वेरी नियर. ओके, वेल दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा कैसे होगा. इट हैज टू बी वाइड एरिया ऑफ कोर्स, so that many of the edge devices can be covered. Shared, multiple apps will be running on top of it. Enable any app in any language in any OS. अगर ये नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं. ऑफलोड करेंगे, सारे लोग ऑफलोड करेंगे. You cannot have restriction. It should be robust, should be secure, and disconnected fallback. The problem is need to encapsulate apps in VMs with containers and this and that. You have to allow virtualization invariably in these cloud servers. I mean these cloudlets. करना ही है. Let's see how it works. This is how it's going to happen. एक को कहते हैं स्टैटिक प्रोविजनिंग, दूसरे को कहते हैं डायनेमिक प्रोविजनिंग. स्टैटिक प्रोविजनिंग का मतलब थिंक इट दिस. मैंने आर्किटेक्चर दिखाया था कुछ देर पहले.
क्लाउड जो कोर है उसका काम इसमें सिर्फ इतना है, उसे हटाया नहीं जा रहा है, उसका काम सिर्फ इतना है, whenever an application wants it to run on a cloudlet, right, the first thing that is done is वो cloud वो provision करेगा, well this particular cloudlet is going to work और इतने सारे VMs इस पे दिए जाएंगे, इतने सारे VMs इस पे दिए जाएंगे, इसे कहते हैं provisioning. The node or the core is going to decide this is the amount of resources I'm going to give, this is the amount of VM, and this is running on this cloudlet, this is running on this cloud, and this is one time. This is called static provisioning. So देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है store all possible VMs on the edge nodes. उसके जितने VMs उस पे रन कर रहे थे उसको वो cloudlet पे डाल दिया. That's called provisioning. ठीक है? Feasible? That depends. Advantages, of course. अब static provisioning मतलब इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है ना, अचानक से मुझे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, डायनेमिक तो है नहीं, इलास्टिसिटी है नहीं, देन आई विल हैव अ ट्रबल. तो फिर से मुझे नोड पे जाना पड़ेगा, नोड को फिर से पूरा रीप्रोविजन करना पड़ेगा, दैट विल टेक टाइम. इससे अच्छा अगर डायनेमिक हो जाए तो अच्छी बात है. डिपेंडिंग ऑन दैट इट कैन चेंज दी प्रोविजन. तो याद रखना द कोर नोड एक्चुअल एंटरप्राइज क्लाउड दैट इज डूइंग द provisioning of the clouds. Okay. Dynamic के यहाँ पे issues है. I think you are aware what can go wrong. The best thing is just in time provisioning. When I need, I do. Look at this. It supports widest range of user customization, strong isolation between uncustomers. So let's take a use case. A traveler wants to use natural language translation with speaker trained voice recognition. हिंदी में बात कर रहे हैं या इसी लैंग्वेज पे गए, and I want that translation to be done in French or German, something like this. Okay, typical application. Alexa से बात करना है, is going to return me German, and that has to be. So usually क्या होगा, Amazon Web Services पे हो जाएगा, you will talk in हिंदी, text to speech बना हुआ है, text में convert करेगा, उस text की Google Translate करेगा, उसकी French निकालेगा, German निकालेगा, कहीं पे वो text to speech वाली comparison होगी, वो चल रहा है कहीं cloud पे, is going to convert that into its equivalent language, उसे फिर बदलेगा into text और वो वापस speaker से तुम्हें सुनाएगा. Okay, usually this is the path which is expected, but I want to do it through a cloud. Okay. Okay. So what we have in this is a virtual machine cleanly encapsulates this complexity but delays provisioning. Okay, let's talk about this a bit later. Let's see the problem. This is the one that I would like all of you to understand, and this is called synthesis. Okay. So what we understood is we need some local infrastructure. ठीक है, जिसे हम cloudlets कहते हैं, पर cloudlets उनपे भी virtual machines रन करने चाहिए, because your application is going to run on top of that. तो जैसा आप cloud पर रन कर रहे थे, अभी cloudlet पे रन कर रहे हैं, so you can also have virtual machines running on top. तो वो बनेगा कैसे? Okay, how does it happen? So इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं VM synthesis. इससे पहले जरा इसको देखिए. Let's talk about this overlay and this. इसको देखिए. So this is the slide that gives you the idea of how the thing happens. Okay. Obtain the base virtual machine from the central core. This is central core मतलब main cloud, enterprise cloud. वहाँ पे आपका एक disk virtual machine बना हुआ है, right? Take that. So this is called base virtual machine disk image. Okay, keep it. Now start. Oh, by the way, ये कहाँ पे आएगा? Cloudlet. Cloudlet के किसी infrastructure पे you take that. Basic कौन क्या है? Which only runs the operating system. कोई एप्लीकेशन नहीं रन करता उस गेम, सिर्फ और सिर्फ हाइपरवाइजर रन करता है बस. ठीक है, उसे हम कहेंगे बेस वर्चुअल मशीन. सो दैट बेस वर्चुअल मशीन इज टेकन फ्रॉम द कोर और वो आपके उस लोकल वाले जो सर्वर है, क्लाउडलेट है, वहां पे आ गया. वहां पे बैठा हुआ है समथिंग कॉल्ड द क्लाउडलेट सर्वर.
that starts running this VM. तो VM अब चलने लगे. What have you done? You install an application. जो application आपको चाहिए, face recognition software चाहिए, आपने उस virtual machine को उसको डाल दिया, and it starts running. After some time, this fellow, जो उसके अंदर जो, no, not this one, the cloudlet server, it stops that. कुछ देर चलने दिए, stop कर दिया, and you save the modified VM disk image. Okay? Then this base disk image, look at this arrow, this one, and this one, whatever you get from here. इन दोनों की एक कंपैरिजन करता है, डिफरेंस निकालता है, बिट वाइज डिफरेंस. ओके, तो उससे क्या पता चला? कर्नल की आपको बिट पैटर्न मिली, एप्लीकेशन रन करने के बाद कर्नल एंड एप्लीकेशन की बिट पैटर्न मिली, एंड इट इज गोइंग टू टेक अ डिफरेंस. दैट्स कॉल्ड द डेटा. दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू सेव, और इसे कहते हैं ओवरले. दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन ओवरले. अब फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये एप्लीकेशन ओवरले लेकर आप चलेंगे और किसी भी डिस्क पे जहां पे उसकी बेस डिस्क इमेज बैठी हुई है, एनी वर्चुअल मशीन, उसको अगर आप वो दे दोगे, then you can run that application. ठीक है? देखो कैसे ऑफलोडिंग में ये हेल्प करेगा. So now if you create this application overlay here, उसे कहीं भी किसी भी हार्डवेयर पे अगर एक VM चल रहा है जिसमें ये बेस VM है इसके पास, आप सिर्फ उसका एप्लीकेशन ओवरले दोगे तो वो उस एप्लीकेशन को रन करेगा. तो ये क्या फायदा होगा? फायदा ये हुआ कि इफ somehow I want to shift from one VM to another and both of them are running, I can just shift that. मैं अभी कह रहा था कि अचानक से आपको एक क्लाउडलेट से उस फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पे वो जुड़ा हुआ था और आपका सोल्जर जो है उस क्लाउडलेट से बात कर रहा था उसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से. तो फेस रिकॉग्निशन वो पिक्चर लेता जा रहा है और अगल बगल कहीं पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज रनिंग दैट एप्लीकेशन देयर, वो आपको उसकी आउटपुट देता जा रहा है कि ओके ये है ये है. अचानक क्या हो गया, वो एक जगह से गुजर रहा था एंड अनरिलायबल कम्युनिकेशन, इट सडनली स्टॉप्स. अब तो वो नहीं दिख पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली आपको वो एप्लीकेशन शिफ्ट करना पड़ेगा टू समबडी एल्स. अदर्स अ ड्रोन विच इज पासिंग बाय, और उस ड्रोन पे इतनी कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन पावर है, और उस पर भी एक वर्चुअल मशीन रन कर सकते हैं which can also be treated as a cloudlet server. तो अचानक आपको क्या करना पड़ेगा? बस आपको वो ओवरले उस पर डालना पड़ेगा, and you are done. Now that starts working for you. दोबारा मेन क्लाउड में, Pardon? दोबारा मेन क्लाउड में भेज देते हैं. नहीं, मेन क्लाउड पे भेजने के लिए आप लेटेंसी है, हम तो उसी को एड्रेस कर रहे हैं. We don't want this. मेन क्लाउड में भेजोगे तो पहले ही भेज सकते थे. आइडिया ये है कि आपके बाय द वे आपकी नेटवर्क इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं कि आप इतना, आप एक रफ टेरेन पे, आप बालाकोट के बॉर्डर पे हैं, कहाँ मिलेगा आपको वो? आप एकदम सुरंग में घुसे बैठे हो, कहाँ नेटवर्क है आपके पास? आपको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर से काम चलाना पड़ेगा. एक बार डिप्लॉय कर दिया. नाउ यू हैव टू यूज दोस लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर. वहाँ पे आप क्लाउड की उतनी लेटेंसी मिलेगी नहीं आपको. लद्दाख चलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ. सो यू हैव टू हैंडल दैट प्रॉब्लम, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू ऑफलोड दैट क्विकली टू समबडी हु इज नियर बाय and make that as a cloudlet server. तो ये बहुत काम आएगा. So you create this application, यही टेक्निक है. This is called an overlay. तो हम क्या करते हैं? This is what we create as a, इसी को कहते हैं VM synthesis, right? You create a base VM, you create a customized VM. जैसे हमने एप्लीकेशन ओवरले की बात की, हम VM की भी ओवरले कर सकते हैं. You have a binary patch that contains customized parts. एक है कि बेसिक पार्ट्स होता है, एक कस्टमाइज्ड पार्ट्स होता है. ओके, एंड यू कैन टेक दिस बाइनरी डेटा, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू, एंड यू कैन सेंड दैट. तो VM भी आप ओवरले कर सकते हो. ओवरले का मतलब ये डिफरेंस भेजेगा. ओके, लेट्स टेक दिस पार्ट. देखो कैसे क्लाउडलेट्स बेस्ड, और ये मैं दिखा रहा हूं द फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर. So how does it happen? The cloudlet based code offload. So here you have the cloudlet host. ठीक है, उस पर रन कर रहा है VM manager, which is actually the one which is handling the VM. Okay, and this is the guest VM1, guest VM2, guest VM many, and each of them is running a server. Here is your mobile client.
देखो इनमें क्या है, ओवरलेज। इसमें क्या रन करेगा, देयर विल बी अ क्लाउडलेट। ओ बाय द वे, इसको कम्युनिकेट करने के लिए यू विल हैव अ क्लाउडलेट एप्लीकेशन कॉल्ड क्लाइंट and a cloudlet application called server. So these cloudlet applications will take these overlays and accordingly send them to the corresponding servers, where these fellows will take them and will run it. Okay? Okay, this is the cloudlet client that sends this application overlay to the cloudlet server, and the cloudlet server will communicate to the VM manager and will run that application on one of these. Okay? Fine. अब ये मिलेगा कैसे? सेम टेक्निक, डिस्कवरी। जो है सर्वर वो ब्रॉडकास्ट करेगा। वो ड्रोन जब उड़ रहा था वहां से, यू नो दैट आईपी एड्रेस ऑफ दैट, वो कुछ डिस्कवरी आपकी है, आपको पता चल रहा है कि ओके, जैसे ब्लूटूथ में बीकन्स जनरेट करते हैं, यू नो दैट दिस फेलो इज देयर एंड आई कैन कम्युनिकेट टू दैट। So there are some discovery services here. So ये इसको पहचानेगा, ये तो यहाँ से जनरेटेड हो रहा है, it keeps a track of who are the ones to which I can communicate and I'll be sending this. So this is, oh by the way, this cloud host पे क्या है, base VM image. Base VM image क्या है, ये जिस base VM पे चढ़ के बना वही VM यहाँ पे है, ठीक है? So this is how you offload things to cloudlets. Okay, let's take an example of this. And this is the application which is a face recognition client. सर VM का स्टेट भी तो मैटर करेगा ना, जब हम क्लाउडलेट में उसको ओवरले चलाएंगे क्या स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट से वो रीजनिंग करेगा, जैसे एप्लीकेशन वही स्टेट से। नहीं, वो हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीटली एप्लीकेशन इस पे रन कर रहे हैं। इट्स लाइक रनिंग योर एंटायर थिंग एज यू हैव डन इन अ क्लाउड। हम इसे ये नहीं करें कि अभी बंद करके वहां पे चढ़ा दें, इट्स नॉट लाइक दैट। हम पूरा एप्लीकेशन ही उस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इट रन्स फ्रॉम द इनिशियल, यू नो, फ्रॉम द बूटिंग पार्ट ऑफ दैट। तो उसमें कोई स्टेट मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो हियर यू हैव दिस, लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। दिस इज द मोबाइल क्लाइंट। सो वही जो हमने अभी आर्किटेक्चर देखा उसी के जैसे एक प्रोटोटाइप। You have a face recognition application client, a Java developed application, and which is running on Android platform. Okay, so you have a cloudlet client again running on top of Android, and this is triggering this particular application, which is the overlay. Let's assume that it is created. So here is the face recognition application overlay used by this cloudlet client and communicated to the host. The host is running Ubuntu. तो यह आपका मोबाइल है, typical Android running mobile, and the cloudlet host is a Linux platform, Ubuntu 10.10. What is it running? It's running KVM, a VM running. So look at this. First of all, this fellow client, it communicates to this cloudlet server. और cloudlet server क्या है? एक Python developed, हमने ChemPy HTTP server रन कर दिया है, just to send and receive HTTP requests. Okay, so this is going to communicate with this cloudlet server through the HTTP requests. Okay, sends an HTTP request, this communicates to this, and now the problem is इसे ढूंढना पड़ेगा, इसकी IP address चाहिए मुझे. Okay, so I need this cloudlet server. Whatever, so I'll don't have time. I'll share with you the details of this in the paper that mentions about that. Just go up and read to this. So let me just quickly tell you about how it works. So the cloudlet client communicates to the cloudlet server. The cloudlet server then talks to the VM. The VM in turn has, as we run in any case, in this case has a face recognition server, as you see, which is the one that will actually communicate to this face recognition client. Okay, this is the one, and what is it? It's basically using a library called OpenCV that does those face recognition part, etc. So it requires this. So this part is the application handling part,
running on top of the VM. Okay? Once it recognizes this, it again sends it to the Cloudlet server. The Cloudlet server passes this on as an HTTP packet to the Cloudlet client. Okay? That's how it works. Okay, what are these? Well, these are again, this is the X delta that is actually using the overlay. Overlay kya hai? The difference, right? From that you have to actually create that application. So this is the library, or you can say this is the library that helps this particular Cloudlet server to generate the application from the overlay receipt. ये तो overlay भेजेगा ना इसको. Application तो चाहिए इसको. Application के लिए क्या चाहिए? Base VM और overlay. इन दोनों को जोड़ के application बनता है. That's why you require this. And these are again to handle other services. We have a discovery service running here that identifies, okay, which of those Cloudlet servers are active so that I can communicate. So this is a typical application of how you can send or offload an application to a Cloudlet. ये उन जगहों पे बहुत काम आता है जहाँ पर bandwidth आपकी अच्छी नहीं है. मैंने आपको एक example दिया था. When you want to send out your, what should I say, the NPTEL kind of e-learning resources to villages where you don't have network. तो आपको पूरी चीज लोकल करनी पड़ेगी. आप NPTEL के क्लाउड से कम्युनिकेट करके नहीं कर सकते. You don't have bandwidth. तो आपको लोकल करना पड़ेगा. How do you offload that? और वो तो आसान है क्योंकि it's not mobile, right? It's a static provisioning. एक बार कर दिया, then you can just keep on updating those cloudlets and communicate. So these are solutions which you can propose to handle these kind of problems. These are very, very interesting problems to work on. Many resources, specifically उन जगहों पे challenges है जहाँ पे आपको उतनी अच्छी network bandwidth नहीं मिलती है. Communication is very unreliable. How do you handle that problem? Right? The rural sector, right? So you have to fall back to idea of cloudlets. Explore this. I'll share with you the paper. It's a wonderful paper. I think CMU के professor है, an Indian who actually gave this idea, and in 2013 or 14 something, and since then it's very, very popular. Okay. This is just to show you the state chart of how the communication establishes. How ये जो अभी प्रोटोटाइप मैंने दिखाया उनकी just communication कैसे होती है from the client onto the server and how that particular thing is managed, and then you send it back, etc. So this is the idea of, you see, we have first of all the client, these are discovery services, it finds out this. Once the cloud server is identified, you upload the overlay, using an HTTP packet here, okay, then it sends this and you perform a VM synthesis. VM synthesis याद है ना? मैंने आपको कहा था overlay है आपके पास, base VM है, तो आपको जोड़ के उसको फिर से वापस आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने डेल्टा भेजा है. इसीलिए आपको base VM की requirement होनी चाहिए जहाँ पे आप उसको रन करना चाहते हैं. So every such Cloudlet server must have a base VM so that once it gets the application overlay, you can add that and you can create that application running on top. Okay. Once it is done, you have performed the VM synthesis, start the synthesized VM, and then launch the VM. And the application starts. So this is the Cloudlet based code offload. I'm not showing this part, so I'll do that. Just to give you some idea of how the performance improves. Okay. Base VM, if you are using Windows 7 and Ubuntu 12.04, these are some of the applications you have. And look at the size. Okay. These are some object detection, face recognition, speech. Majority of these big neural network based applications. All you want to do, run them on mobile devices. चलेंगे कैसे भाई? जगह तो है नहीं. Offload करना. And this is some of the ideas that you can have. So all these are AR, VR वाले applications. Huge. So for them, this is the idea, some idea of how much amount of disk and how much amount of memory you require for them.
आप overlay सिर्फ स्टोर कर रहे हो. That's the beauty of this part. You're not storing the entire application. And this is the synthesis time. ये भी important है क्योंकि वो बनाना पड़ेगा ना आपको वहाँ पर. Overlay के साथ आपको base VM ऐड करके वो बनाना पड़ेगा. So that part has to be very very crucial. कितना time आप spend कर रहे हैं उसमें. वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गड़बड़. Okay, so that is maximum it goes up to for an AR application. You will have 140.2 seconds. That's a good one. So overlay size reduced by order of magnitude. Okay. But there is still provision for optimization. तो ये भी एक research ideas है, where इस overlay को हम optimize कर सकते हैं. Minimize the virtual machine overlay. मैं इस virtual machine overlay की बात कर रहा हूँ, application overlay की नहीं. Virtual machines को भी हम overlay कर सकते हैं. And you can accelerate VM synthesis. So this is some of the techniques which उसमें से एक जो आता है उसे कहते हैं. Okay, for this you use this technique called duplication, and for this you use something called pipeline. Okay, तो पहले वाले के लिए overlay बताना है duplication, and the second one is called pipeline. What is duplication? You remove the redundancy in the VM overlay. I'm talking about VM overlay, by the way. Let's quickly go to VM overlay, and I hope today others are not going to take a class. Is there anyone waiting for us? Then I can continue maybe for extra 10 minutes. I hope the classes are over. हाँ? नहीं, अच्छा 11 बजे है. ठीक है, because time है. So हम अभी एप्लीकेशन ओवरले की बात कर रहे थे. वैसे ही एक और चीज हो सकती है जिसे हम कहते हैं VM ओवरले. Right? Look at this. ये आपका बेस VM है, ये आपके कस्टमाइज्ड VM है जिसमें आपने मॉडिफाई किया only to keep the customized parts, और इन दोनों की डिफरेंस जो बनती है उसे कहते हैं बाइनरी डेटा. डिफरेंस ऑफ दिस, डिफरेंस ऑफ दैट, एंड इट इज कंप्रेस्ड फर्दर. तो वो जो बनता है उसे कहते हैं ओवरले VM. इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश है, आप इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज द आइडिया? जगह नहीं है हमारे पास चीजें रखने की, तो कितनी कम चीजें रखकर हम फिर से उसे जोड़ के बना सकते हैं. दैट्स कॉल्ड सिंथेसिस. अगर आप इस तरह की चीजें करोगे तो सिंथेसिस करना ही है. ओके, सो इवन VM कैन हैव एन ओवरले. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एज द एप्लीकेशंस. Remove the redundancy in the VM overlay, and sources of redundancy within the base VM, between the VM overlays, memory and disk. Just go through this slide so you'll understand what possibilities can be done. Okay, so a typical application or the figure gives you an idea of how the optimization can be done. Here it talks about the different chunks that you have kept. Chunks, in sense, the bits are placed in groups. तो उसके कुछ optimization से ढूंढ रहा है. Just to show you this idea. Okay, I'm not going to this maybe. Yeah, let's come to this. इसे कहते हैं pipeline. Pipelining is a technique of overlapping steps. एक खत्म हुआ नहीं तो दूसरा स्टार्ट हो गया. आप इसके लिए वेट नहीं कर रहे. इसकी जब कुछ देर चली, you start the other. तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, the first one that you see is called sequential. Transfer the VM overlay, decompress, apply the data. इनको आप इस तरह से करोगे. एक को मेमोरी ट्रांसफर किया, फिर decompress, डेल्टा, disk transfer. तो ये ना करके, if you just try to overlap that, that's called pipeline. तो आपका टाइम बच जाएगा. सिंथेसिस टाइम घटा सकते हैं. ओके, तो ओवरले की बिट्स की जो कॉमनैलिटीज है उसको हटा के आप VM ओवरले साइज घटा सकते हो और पाइपलाइनिंग करके VM सिंथेसिस टाइम कम कर सकते हो. So still possibility of optimization. So these two are great ideas to handle the problem of computation offloading. Okay, so I took the idea of, let's forget about this. So this is the
idea of edge computing. I took the technique or the route of making you aware of what are the challenges that we face when we talk about edge computing. अच्छा है पर इसमें कुछ technical challenges हैं और उसे primarily हटाने के लिए लोगों ने अभी तक क्या किया है and what can be done. There are still possibilities of optimization. Right? So that brings us to the end of this course. And let's quickly summarize the key takeaways from this particular course. So this course is all about understanding of how do you run applications. What is a cloud after all? Why do we need cloud? So cloud, what we found is primarily nothing new, but just an extension of already old ideas of running, applications on specific hardware. But this time the hardware was far away, lots of hardware resources available and many applications on one side. How can these applications be run on that particular hardware is what we call the idea, or what we thought as the idea of cloud. And two important things to consider was the applications would run anytime, anywhere, irrespective of whatever be the platform on which you want them to run on. So 24/7 these applications will be available. You will not be worried about where is it running. I don't care about where my applications are running. So we saw that the two key technologies which drive this whole cloud computing thing, one was virtualization and two, the web interface or the web 2.0. We discussed about virtualization in details. What is virtualization? Why is it the key thing of understanding of this cloud computing? How can we virtualize? We discussed about the different virtual machines, the detailed discussion about hypervisors. We discussed about para-virtualization. We discussed about full virtualization. We discussed about hardware-assisted virtualization. We discussed about how you can virtualize memories. We talked about page tables, shadow page tables, how that is being done. We discussed about virtualization of IOs, networks. Then we moved on to the other side of virtualization, which is called containerization, which is not isolating the processes, but isolating or looking at a different view of the process. You look at a different view, I look at a different view. That's called containerization. And today it has become very, very popular because people just want to port everything created and just send it to a different, keep it in a container and send it, and there you will just unpack and run it. So we discussed about containers. It is again a kind of virtualization. Then we moved on to the idea of understanding of service-oriented architecture. That's again because after all everything is provided in cloud as a service, infrastructure, software, platform. So it's important that how do you access those services? And we ended up into the idea of something called web services. But these web services are a bit different. There are two protocols we discussed about, SOAP and REST, two different styles of accessing those services. We discussed about APIs that help us to access those services, how you write those services and how you can invoke those services in order to access that. Well, so after this we moved on to the discussion of the fog computing and the other part, that is the challenges involved in cloud. One of that was security. So we discussed about cloud security, which is a major issue. There are many, we discussed about storage requirements. And so we discussed about two case studies. We took Bigtable and Dynamo, Amazon's Dynamo, and Facebook's Haystack. So we discussed about three ways of storing data. That's again a very, very crucial thing when you handle cloud. And we discussed about a problem of cloud called cloud security. Why is cloud security a problem and how can you handle that? Then we shifted to handling the problem of latency, the other problem of cloud. And to handle that, people have come up with two solutions. One is called the fog computing and the other is edge computing that we discussed today. So overall, this is in totality the things that we covered in this particular course, right? At the same time, on the lab and the project, etc., the idea was we started off with understanding of how do you build your own virtual machines,
We took a case study first of all called OpenStack, which is already provided private cloud, where you can create instances, etc. Second thing we discussed about is KVM, which is something that Linux provides you, and hardware assisted thing, which you can create your own virtual machines. Then we discussed about how do you handle containers, how can you create your own containers. Fourth, we discussed about creating your web services, and you are given a task of running those web services on some virtual machines. So at least these 4 concepts you have done, or you should do hands-on. That should give you an idea of how to communicate. Obviously, we also discussed about migration and all, and there was a problem of auto migration. How can you move some VM content from one to the other? So this is the expected outcome of this particular course in terms of theoretical concepts and the lab. I hope it made some sense to all of you, right? Well, so now your part is left, which is first I'll take an evaluation of the term papers of MTech, which I hope you are working on, you are ready with that. And I want all the BTech students to be present during that term paper demonstration. I want a PPT where you're going to explain. Let me be very clear. I don't want unnecessary slides. 10 slides is good enough. Don't unnecessarily put things in there which you don't know. आप पढ़ के आओगे और उस पेपर की मेन प्रॉब्लम क्या थी, वो पेपर किस चीज़ की क्या कहता है, उसमें मेन प्रॉब्लम किस चीज़ पे कहा गया है, उसकी क्या ड्रॉबैक्स है, बस यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मुझे प्रॉब्लम समझना है, ठीक है. बहुत कुछ फैंसी चीज़ें फिगर वो सब डाल सकते हो, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन चाहिए उस प्रॉब्लम की. प्रॉब्लम है क्या टेक्निकल, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया था उसने, राइट. उसके रेलेवेंट अगर 1-2 पेपर आपको एडिशनल पढ़ने पड़े तो प्लीज उसको पढ़ना है, राइट. I want all the BTech students to be present there, because that will give you an idea of the research being done in this particular field, and maybe you can take something good from that. For term projects, again, because it's not a research content, मैं उसकी demonstration और implementation देखना चाहता हूँ. I'm not interested in the research component, that कोई novelty है नहीं उसमें. पर research term project की deliverable important है कि वो चल रहा है from end to end. Is it okay? Yes. That's it. And I repeat, many of you are very poor in attendance. अगर ये है तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, वो बहुत सीरियस है. और C2 जो कि मैंने पहले कहा है कि इस C2 for BTech is a quiz and the lab evaluation. तो अगर आपका अटेंडेंस बहुत पुअर है तो आपका नाम कुछ देर में आने वाला है, वहाँ पर आप देख जाओगे कि C2 आपके लिए नहीं है, ठीक है. सर क्विज सिलेबस है टिल टुडे? नहीं, क्विज सिलेबस में फॉग और एज नहीं रहेगा. वेब सर्विसेज लेके ये नहीं रहेगा. फॉग एंड एज इज नॉट पार्ट ऑफ द क्विज.